Hello everyone. So today we'll start the topic of the real analysis, topic unit 3. The topic is at limit topic. Okay, so before starting the topic of limit, first I'm writing the definition, right? What's the definition of the limit? हमें क्लास 12 तक लिमिट और डेफिनेशन बेले काना बुझुतो ना हमें क्लास 10 और क्लास 12 रे जेबे पढ़ना लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल रो मीनिंग काना और से कान लगी दरकार पड़ला फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जेना बुझुतो नु कि व्हेनेवर x approaches to a we just see that fx approaches to l ଆମେ ଏତକି ଜିନିଷ ଜାଣୁଥିଲା कि जेबे जे x ର वैल्यू a पाके जाउछे fx ର वैल्यू l पाके आउछे नाउ से डेफिनेशन ता आमे एमती नोतला कि x approaches to a ता मीनिंग करा either x approaches from the left hand side or from the right hand side if x approaches to a from the left hand side we write it as x tends to a minus and that we call as left hand limit, and if this approaches from the right hand side we write it as x tends to a plus and we say is that x approaches to from the right hand side and this is called right hand limit. But why it is necessary to have the concept of limit? Because देखो मोर पाके बहुत टे एमती फंक्शन अच्छे मैथमेटिक्स रे जिन फंक्शन टा at a certain point as a certain point I can say that at some points or at one point is not defined. Like simple example, I say that x square minus 9 by x minus 3. Our elements रे class 12 रे भी हमें first topic इटा ही देखसु सब वाले ई definition देखसु. So at x equal to 3 the function is not defined, right? At x equal to 3 we have that 0 by 0 undetermined cases. That's why I say that the function is not defined at x equal to 3. But the mathematicians are now interested to find the behavior of the function nearby x equal to 3. So 3 रो तो defined नहीं no, but 3 रो neighborhood root रे तो function defined है. तो तार behavior means करा x যদি 3 के approach করছে left hand side रे fx रो value কাহার পাখে যাচ্ছে at the same time whenever x approaches from the right hand side to the 3 then fx goes to where. So if a function fx is not defined at a point may or may not be defined. Suppose I am saying the function is not defined at x equal to a, but we can study the behavior of fx at nearby a, and that study is nothing but that limit. Okay, but in real analysis in the where we start the understanding the topic very briefly, so से जगह रे limit रे concept काना ठीक है बुझवा लगी. गोटे फर्स्ट एग्जांपल देसु आमे आर्चरी देखुसु. आर्चरी मीन्स आमे जेन ओलंपिक रे तीरंदाजी देखसु मैं शूटिंग सपोज शूटिंग कोच मी सपोज मते शूट करवा लगी कहला ई पॉइंट के शूट करो. सपोज नंबर लाइन बुझो छ बहुत इजीली बुझी पारमा. सपोज मते ई पॉइंट के शूट करवा छ एंड मते ई बाउंड्री दियाला कि लाइन रे ठियाई करी मारो. सपोज ई लाइन रे ठियाई करी मारो और ई पॉइंट के ई पॉइंट के केनसी गोटे पॉइंट के शूट करवा ले दियाला. तो सी पॉइंट के शूट करवाटा बेटर है जदि करि पारछन बहुत भल कथा. बट सामना लोकटा मते टिके रिलैक्सेशन देला कि ठीक अच्छे बाबू कि तुम ई नेबरहुड रे जदि मारू छ भी तुम शूटिंगटा इने ठेक जदि ई मारबू छ देन यू कैन गेट द 10 points or the full marks. ठीक सपोज दिस इज द एल मते शूट करवा अच्छे सी रे रही करी. तो कहला that authority or the competitor is given a error means तुम जो l minus epsilon l plus epsilon भीतर तुम जो शूटिंग टा पड़ू छे then you also get the full marks. C
एरर के देखी करी मी मोर मुवमेंटा फाइनल करमी कि मोर मुवमेंटा केतेरु केते भितरे रहले केतेरु केते भितरे रहले मोर शूटिंगटा इ मझिरे पड़वा दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन बैंड कना क्वेश्चन থাকে एप्सिलॉन बैंड तो अकॉर्डिंग टू दिस एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा such that जदि मी इ नेबरहुड जेन पॉइंट रे भी ठिया हेमी मोर शूटिंगटा इ मझिरे ही पड़वा जेन पॉइंट रे भी ठिया हेमी मोर पॉइंट रो शूटिंगटा इ मझिरे पड़वा okay so I am writing the definition of the limit we say that proper definition आगे rough definition लगो फिर proper definition पूरा भर कर बता मैं we say fx has a limit L at x equal to c that means for every epsilon greater than 0 there exists a delta positive such that fx belongs to L minus epsilon to L plus epsilon whenever x belongs to C minus delta to C plus delta. Just this is a rough definition, not exact this definition. I'm exact definition एबे दमा टिके धीरे धीरे करे तो तार मीनिंग काना देखो we say fx has a limit L at a point x equal to C if for all epsilon given देला तार लगी उडे डेल्टा दे भालला there exists delta such that fx टा suppose this is x here ता shooting टा fx इन पड़ू छे suppose this is x ता shooting टा इन पड़ू छे fx जेबे x whenever x belongs to C minus delta to C plus delta fx टा कार मझिरे पड़ू छे L minus epsilon to L plus epsilon then we say that this or we write it as limit x tends to a fx is equal to L ए बेटा आउ प्रॉपर सुंदर डेफिनेशन पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन दा दो छे जेंडा हमर डेफिनेशन मोहिरा लिखा देसे ओके let D be a subset of R, D for domain, and f is a function from D to R. Be a function. This is a definition of the limit. Let C belongs to Ddex. Now what do you mean by Ddex? Set of all limit point of D. मैं आगे वीडियो दे तुमको व्हाट डू मैं लिमिट पॉइंट पूछामी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लिमिट x बिलोंग्स टू dx अच्छे मीन्स भाभी दिया dx इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट डेफिनेशन मैं आगे वीडियो रे देखमा x बिलोंग्स टू dx ए रियल नंबर L is said to be limit of f at C if for all epsilon greater than 0 there exists a delta positive such that fx belongs to L minus epsilon ru L plus epsilon whenever x belongs to n of C minus delta C plus delta minus C. Why I am removing that point C? जेंटा मी तुमको कहली मत L के शूट करवा छे there exists a neighborhood L that given is a neighborhood तो C रे देखो C रे फंक्शन टा डिफाइन हे भी पारे नै भी पारे बिकॉज आमे लिमिट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करछु जदि फंक्शन टा डिफाइन नै थिबा बोली हे गले तो बहुत भल कथा जदि C रे सपोज डिफाइन नै न तो f of C तो डजंट एग्जिस्ट दैट्स व्हाई मी x टा किनो नो छे C minus delta to C plus delta I'm just removing that C here from the neighborhood on the same concept और जदि x टा इने अच्छे fx टा L minus epsilon to L plus epsilon रे पड़वा तो this is a definition of the limit okay
अच्छा जेमती आमे देखीछु कि दैट लिमिट L must be unique. This limit point L must be unique. So first I am giving the definition theorem that prove that ki we cannot have a more than one limit at a point C. Let D be subset of R and F from D to R be a function. Let C belongs to dx. Again, dx is the set of all limit point. Then F can have at most one limit at C. At most he भी पारे maximum one limit he पारे नए भी limit exist करे zero limit. We will prove this by method of contradiction. Proof. Let us assume that F has two different limit L1 and L2 at x equal to C. Let, without loss of generality, that L1 is less than L2 or L2 is less than L1. तो मैं जेंटा भी नहीं पा रहा हूँ तो भल को सुनना मैं भल वाला के बात सुनना है. Suppose here we have L1, we have L2. ठीक है तो मुझे गोटे एंता नेबरहुड नौचे जेना दुई जन को टच नेबे इंटरसेक्ट न करे. So we will find neighborhood these and these. Okay. So me kana koli let epsilon equal to L2 minus L1 by 3 कर देली. So L1 minus L2 is this system ताकि तीनटा पार्ट कर देली and we have taken a L1 minus this epsilon. L1 minus epsilon, L1 plus epsilon, L2 minus epsilon, L2 plus epsilon. So पक्का करा हवा ये दुई नेबरहुड इंटरसेक्ट नहीं करन डिसजॉइंट अछि. The L1 minus epsilon, L1 plus epsilon and L2 minus epsilon, L2 plus epsilon neighborhood are disjoint. Okay, as we have seen that the function has two limit exist koruche tar meaning. So there exists a delta 1 for L1 and delta 2 for L2 positive. C इनके अच्छे ना तो क्या नाम देखो भल कर ध्यान रखो मैं पे delta 1 neighborhood fx belongs to L1 minus epsilon L1 plus epsilon for all x belongs to C minus delta 1 C plus delta 1. भल कर सुन मैं पे जेतु L1 लिमिट है fx रो ई नेबरहुड लागी C1 रो C रो गोटे डेल्टा 1 नेबरहुड बाहरला सच दैट जेबे जेबे एक्स टा इने रहले तार नेबरहुड इना पड़ला. अगेन डेल्टा 2 बाहर छे L2 लागी. अगेन आई एम राइटिंग fx बिलोंग्स टू L2 minus epsilon रो L2 plus epsilon for all x belongs to C minus delta 2 C plus delta 2 minus C both रे नो एबे सुनमा मजा लागवा. देखो गोटे जिनिस सी रो तुम जदि डेल्टा 1 नेबरहुड नौछ डेल्टा 1 नेबरहुड नौछ तार सब इमेजटा L minus 1 epsilon रो L plus 1 epsilon पड़े. डेल्टा 1 डेल्टा 2 नेबरहुड नौछ देन तार सब पॉइंट और इमेजटा L2 minus epsilon रो L2 plus epsilon मझिरे पड़बा. सो मी का करमे लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ delta 1 delta 2 नहीं को suppose why we are taking minimum बहुत जन को confusion थे से कहाँ लगे minimum लेना सर. देखो suppose that C रो मैं नेली दुई neighborhood suppose delta 1 दुई neighborhood थेला 2 neighborhood means C minus 2 length C plus 2 length है ना तार सबू point रो image टा इमोजी रे पड़ू थेला. suppose
एंड तापर कहला सी रो सपोज 5 नेबरहुडटा सी प्लस 5 रो सी प्लस 5 रो ई सबू पॉइंट रो नेबरहुड रो पॉइंटटा ई भितरे पड़ुछे भल के धुमा ई छोट नेबरहुड रो सब पण ई भितरे पड़ुछे एंड ई सबू पॉइंट रो नेबरहुडटा इते भितरे पड़ुछे नाउ दैट मीन्स दैट इतार भितरे तो ई जिनिसटा आसुछे भल कर ई नेबरहुड सबू पॉइंट रो इमेजटा इने पड़ुछे तो पक्का ई नेबरहुड रो पी पॉइंट इने पड़ुछे सो दैट्स व्हाई डेल्टा इज मिनिमम ऑफ 2,5 आई विल चूज 2 जेहेतु इता नेबरहुड रो इति पड़ुछे इता नेबरहुड रो ई पॉइंट इने पड़ुछे तो ऑब्वियसली ई नेबरहुड रो पॉइंट इने भी पड़वा सो आई हैव टेकन डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 नाउ आई कैन से दैट सी that means for all x belongs to c minus delta to c plus delta fx टा किनो पड़वागा l1 minus epsilon रू l1 plus epsilon भी पड़वा and fx टा किनो पड़वा l2 minus epsilon रू l2 plus epsilon रे भी पड़वा बट आमे जानी छो दुई नेबरहुड टा डिजॉइंट है बट द नेबरहुड L1 minus epsilon, L1 plus epsilon, L2 minus epsilon, L2 plus epsilon are disjoint. So fx टा किनो belong करवा 5 है सेटा which is a contradiction. So fx cannot have two limit. So fx has, I can say that at most one limit at x equal to c. So the limit point of fx at a point L, C is always unique. In the next video, we'll see some examples, limit point and the sequential criteria. Thank you.